Yeah. Am I audible? नेट चला गया था. These net issues. ठीक है. So yeah, where was I? I was saying कि हाँ, I would like to congratulate everybody here because we've successfully completed our HTML and CSS, and Monday से you'll be starting with JavaScript. Okay. And let me tell you one more thing. I won't be teaching or tutoring you all from Monday. Your tutor will get changed, or your trainer, respective trainer, whoever it is to be, will get changed. Just would like to tell you, and then चलो start करते हैं. So कल हमने क्या क्या देखा? What did we cover yesterday? Can somebody give me a quick revision? Yeah, flex, display flex देखा. So did you all actually try it? किसी को कोई प्रॉब्लम आई? पोजिशनिंग तो परसों हो गया था. लेआउट्स, ये फ्लेक्स और ग्रिड को ना, या देयर इज आल्सो डिस्प्ले ग्रिड. आई वुड लाइक टू टेल यू कि ग्रिड का कैसा होता है ना. you'll go through the documentation, you'll understand. Flex की तरह ही होता है. It is used for layout purposes only, and almost similar से concepts हैं. Flex boxing और grid boxing. Either you can choose to use in your websites whenever you're making something. Display box or block. Try to yes. So okay. हाँ, yes, display block. Yes, so grid boxing का जो concept है ना, it is similar to flexing only. इसीलिए I taught you flexing because एक logic तुम्हें समझ आए कि how to use layouts. So another concept in layouts itself. जैसे हमारे पास multiple frameworks होते हैं ना, CSS के जैसे Tailwind है, और उसके साथ उसके क्या बोलते हैं, एक competition में, और rather एक supplementary, there is this what we call bootstrap, right? So similarly, वैसे ही यहाँ पे flex and grid का एक concept है. So when you use layouts, you either choose flexing or either choose grid boxing. So it is up to you. So अब मैंने तुम्हें flexing तो बता दिया, but go through grid boxing also, so you'll understand what difference there is in those two and how much similar are they. Okay. So today what we'll be doing is, although you have a guest lecture and I see the guest lecturer has come, I would ask my guest lecturer that I would require थोड़ा सा time. Okay. And मैं बस दो concepts बता के I'll hand over the lecture to you. ठीक है. So let's start then. There is हाँ, हमने कल क्या बात की थी? We wanted to see today that how to use variables, right? I'll share my screen. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉपर वेबसाइट्स. क्योंकि कैसा है, हमने देखा है राइट कि हमारे CSS के जो स्टाइलिंग्स होते हैं वो कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं. लाइक सी फॉर एग्जांपल हियर इटसेल्फ माय CSS स्टाइलिंग इतनी बड़ी है कि मुझे स्क्रॉल करके गो थ्रू करना पड़ रहा है. सिमिलरली योर ऑल्सो. ठीक है, यहाँ तो छोटा छोटा है. सो देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स, एंड मेजरली दिस इज यूज्ड फॉर कलर्स. तो उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ. यू सी दिस इज कमेंटेड कोट आउट हियर. हाँ, ये देखो. तो मैं अब वेरिएबल्स किस किस को याद है कि वेरिएबल्स क्या है? हमने वेरिएबल्स ना आई थिंक 8th 9th में पढ़े होंगे इन मैथ्स. एक टॉपिक हुआ करता था. या Zed, yes, even your case study I saw. हम उसके बारे में बात करते हैं. Yes, मैं कहा था. Okay, हाँ, there was this concept of variables and constants in हम जब 9th 10th पे थे ना, तो there was this topic called linear equations, right? तो उसमें there was x, y, z ऐसे कुछ variables होते थे. 7x plus 5y is equals to 20. तो what are these x and y? These are some values
or these are some alphabets we can say which store numbers, right? हाँ, यूज टू स्टोर वैल्यू, एग्जैक्टली। सो वेरिएबल्स को एक बॉक्स की तरह कंसिडर करना, एंड उस बॉक्स में हम जो चाहे वो डाल सकते हैं। इट इज अ कंटेनर फॉर अस टू यूज हाउ एवर वी चूज टू, राइट? सो सिमिलरली अब ये देखो, व्हाट यू डू, हाउ डू यू असाइन वेरिएबल्स और हाउ डू यू राइट वेरिएबल्स हियर इन सीएसएस एटलीस्ट। तुम सीखोगे इन जावास्क्रिप्ट, you'll understand and learn how to use variables and what are constants, what are variables, when to use what. You'll learn this in the first week itself, because these are all building blocks in JavaScript. Okay. Just to give you an introductory idea of what variables are, see, um, ये देखो यहाँ पे मेरा एक रूट एलिमेंट है ना। व्हाट इज माय रूट? रूट इज माय दिस। अगर मैं किसी HTML पेज पे जाऊँ, सो हमने याद है जब HTML का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, सो व्हाट डिड वी कॉल दिस? आर HTML टैग को हमने क्या बोला? दिस इज आर रूट एलिमेंट। दिस डिफाइंस कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है, खत्म कहाँ तक होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड हियर टू असाइन। एक मैं जैसे सूडो सिलेक्टर का मैं ये यूज करता था ना, कोलन। मैं इसको जूम कर देता हूँ। सूडो सिलेक्टर का जैसे मैं कोलन यूज करता था ना, वही कोलन मैं यूज करूंगा और रूट लिखूंगा। इससे मैं डिफाइन करूंगा अपने रूट सिलेक्टर को, राइट? एंड देन उसके अंदर व्हाट आई विल डू इज डबल हाइफन, दिस वन डैश टू डैश, डबल हाइफन से मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू असाइन करूंगा। दिस कैन बी एनीथिंग। इसको मैं लेट्स से व्हाट डू आई पुट हियर, माय नेम, आई कैन सॉरी, आई कैन इवन पुट माय नेम हियर। एंड वो क्या करेगा? दिस विल कंसिडर दिस। जब मैं ये असाइन करूंगा ना दोनों हाइफन्स को, तो इसके आगे मैं जो भी वर्ड को लिखूंगा, इट विल कंसिडर इट एज अ वेरिएबल का नेम। जैसे हम डालते हैं ना एक्स वाई, तो वैसे ही ये मेरा एक्स या वाई हो गया, मेरा जो नाम है यहाँ पे। सॉरी, वो मेरा एक्स वाई हो गया। एंड उसके आगे मैं अपने कलर को डिफाइन कर दूंगा। सो इट बिकम्स इजी फॉर मी, राइट? अब ये हेक्स कोड को याद रखना इजी है क्या? Yes, no? Do you all think I can always write this hex code unless and until I don't copy paste it? There is always a chance कि मैं कुछ गलत लिख दूं यहाँ पे। Yeah? No. As in, you're saying I can write this hex code every time. I can remember this everywhere. Yes, I am. हाँ, okay. हाँ, exactly. Not possible. So for that reason, what we do is we write variables. We create variables के लिए। तो अब easy हो जाएगा ना कि this is showing my blue color, तो why not put this as blue, right? एंड मैं इसको एज ब्लू करके ही एक्सेस करूंगा। अब ये ऑल्दो दिस इज अ डिफरेंट कलर देन व्हाट आर ब्लू इज सपोज टू बी, राइट? हमारा ब्लू जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ब्लू हियर, आई राइट दिस ब्लू, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको किसी, शुड आई पुट दिस, नो नॉट हियर, ये बहुत अच्छा। चलो मैं एक नई फाइल ही क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से वेरिएबल्स की .html, राइट? एंड मैं उसमें ये मैंने डाल दिया, एंड आई विल पुट हियर, ठीक है, ये तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट? अभी फिलहाल के लिए। एंड इसकी मैं स्टाइलिंग के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल पुट लिंक एंड CSS। और मेरी इसका नाम क्या था? आई विल रिमूव दिस, दिस इसमें था, राइट? यस। सो इनकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा स्टाइल्स 3। तो अब इससे क्या हो जाएगा, व्हेन आई रन दिस कोड, यस, सी व्हेन आई रन दिस कोड, तो ये एक मेरा ब्लू बैकग्राउंड मैंने अपने बॉडी पे सेट किया था, राइट? यहाँ पे। अब व्हाट इफ आई वांट टू यूज दिस, राइट? सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटाऊंगा एंड आई विल पुट where, ठीक है, और उसके अंदर ब्लू। सो व्हाट दिस विल डू इज चेंज माय बैकग्राउंड कलर। ये देखो, दिस इज अ डिफरेंट ब्लू, राइट? ये वो ब्लू है जो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू पुट वेरिएबल्स। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर्स को असाइन कर सकता हूँ, यस और नो?
कैन आई नॉट असाइन मल्टीपल कलर्स हियर, जैसे ये मेरा ग्रीन हो गया तो मैं इसको ग्रीन, और यू कैन ऑल्सो पुट ऐसे मीनिंगफुल नेम्स के व्हाट इज दिस कलर एंड व्हाई एम आई यूजिंग दिस, व्हाट इज दिस कलर एंड व्हाई एम आई यूजिंग दिस, और व्हाट इज दिस कलर एंड व्हाई एम आई यूजिंग दिस। तो ऐसे मैंने इसको बोल दिया, जैसे देखो यहाँ याद है मैं कलर्स डॉट हंट पे गया था, यहाँ पे कलर्स हंट, या इधर ही है। तो यहाँ पे देखो जैसे मेरे पास 4 कलर्स थे, राइट, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं डाल दूँ अगर मेरा प्राइमरी कलर, प्राइमरी हाइफन कलर, राइट, एंड मैं क्या करूँ, इसको कॉपी करूँ, ये मेरा कॉपी हो गया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये इजी हो गया ना मुझे कलर्स डिफाइन करना। कंट्रोल V, ठीक है। तो इसी तरह से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट कलर्स हियर, समझा? Is it difficult to do? Yeah, can you all assign your own variables and use it? This is just for your ease. ऐसा कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि that you do this, but ये एक कभी daily practice सी हो गई है between developers. Because what happens is this makes our jobs easier, right? अगर मैं इसको बोल दूं कि okay, I am assigning you this value, तो I can just access that value anywhere in my code, wherever I want it, right? And I don't have to always go to the documentation or wherever I am storing this value and वहां से मुझे बार बार copy paste नहीं करना पड़ेगा. It makes my job easier. So this is what basically variables is. So with this, now you can make proper full-fledged HTML and CSS websites now. Yeah. So just to make your work little more easier, okay, हम CSS के frameworks यूज करते हैं for y'all to not hard code your CSS and to give you a soft template of how to use CSS components. So for that मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और actually I think I never mind. ठीक है चलो कोई नहीं, let's go here. Tailwind. I am going with Tailwind CSS because Tailwind CSS is more industry friendly. I told you yesterday ही. You can also use Bootstrap. मैं Bootstrap का भी बता दूंगा. It is not that difficult. देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्स में जाऊँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टेलविंड CSS की ना एक लाइब्रेरी है, ओके, ओवर द इंटरनेट प्रेजेंट समवेयर, ठीक है। अब ये याद है हम अपने जो ये बना रहे थे, क्या बोलते हैं, CSS फाइल्स बना रहे थे, तो उसमें हाउ आर वी राइटिंग कोड ऐसे, लाइक इफ आई वांट आर्टिकल लेफ्ट, तो मैं सॉरी मैं मेरे टेक्स्ट को लेफ्ट पे फ्लोट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आर्टिकल लेफ्ट का एक क्लास बना लूंगा। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, इसके हेल्प से आई वाज यूजिंग मल्टीपल क्लासेस ऑन अ सिंगल टैग, राइट। मैं यहाँ पे था, राइट, और यहाँ पे था समवेयर, मैं मल्टीपल क्लासेस को एक साथ लिख पा रहा था एक ही इसके अंदर, टैग के अंदर। सो हाउ वाज आई डूइंग दैट, यूजिंग CSS का माय ओन फाइल। सो ऐसे ही सिमिलरली जैसी मैंने CSS की एक फाइल बनाई है ना, वैसे ओवर द इंटरनेट एक फाइल एग्जिस्ट करती है और CSS की एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, जिसमें से तुमने क्या करना है, सिर्फ उसको एक्सेस करना है। वो एक्सेस कैसे करते हैं वो मैं भी सिखाऊंगा। एंड जब उसको तुम एक्सेस करोगे, सो यू डोंट हैव टू मेक योर ओन CSS क्या बोलते हैं फाइल, तुम्हें कुछ हार्ड कोड नहीं करना इन योर CSS। ऑल यू हैव टू डू इज add keep on adding classes to your HTML का elements. Isn't that easy? So see this, मैं यहाँ पे अभी because we are using HTML, okay, that is the reason मैं play CDN पे जाऊँगा and I'll copy this script src का tag, ठीक है। I'll copy this and what I'll do is मैं अपने variables वाले में, क्योंकि वो अभी खाली है, उसमें मैं ये पेस्ट कर दूंगा। So we don't need this, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सो अब इससे क्या हो गया, मेरा जो टेलविंड का डॉक्यूमेंटेशन था ऑफ माय CSS फाइल, ओके, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। नाउ हाउ डू आई यूज दिस, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आई टेल यू। ये देखो इसने क्या किया है, लेट्स टेक दिस ओनली एग्जांपल। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब ये देखो, ये मेरा एक H1 टैग है,
ठीक है, ये समझना तो सिंपल है ना कि ये मेरा एक H1 टैग है, इसमें एक क्लास है एंड उस क्लास में मैं कुछ क्लास एट्रीब्यूट है सॉरी, और उस एट्रीब्यूट में मैं कुछ क्लासेस को डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे अंडरलाइन है, फॉन्ट बोल्ड है, ये एक वर्ड है, ओके। क्लासेस, तो इससे हो क्या जाएगा कि व्हेन यू गो टू योर वेबसाइट एंड आई रिफ्रेश दिस, ओके, सो सी दिस, मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट नजर आ रहा है। डिड आई पुट एनी कलरिंग, एनी सीएसएस डिड आई यूज फ्रॉम माय साइड, मैंने क्या कोई सीएसएस की फाइल बनाई या मैंने कहीं पे सीएसएस को इंपोर्ट किया? ओके, ये वाली जो है आई विल कमेंट दिस आउट, ठीक है। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कोई भी सीएसएस फाइल अपनी तरफ से नहीं डाली है। ये जो है टेक्स्ट, ये आ रहा है टेलविंड की सीएसएस के स्टाइलिंग की तरफ से। अब वो क्या बोलते हैं, पिंक इसलिए दिख रहा था बिकॉज आई हैड माई प्राइमरी कलर सेट हियर, ओके। वेयर वाज द, यस, यहाँ पे देखो मेरा प्राइमरी कलर मैंने H1 को सेट किया हुआ था, इसलिए वो पिंक कलर दिख रहा था। व्हेन आई रिमूव्ड इट आउट, दीज आर ऑल स्टाइलिंग्स जो टेलविंड सीएसएस की तरफ से आ रही है। आई एम नॉट यूजिंग एनी स्टाइलिंग फ्रॉम माई साइड। Simple सी चीज है, राइट? You all can do this. Now to get an idea of what more it is providing or what how to use what styling, तो यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंटेशन सा है where you can go and refer। जैसे देखो यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट में स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, हावर फोकस तुम कैसे कर सकते हो, मैंने यूज दिस। तो ये देखो, अब मैं हावर बैकग्राउंड स्काई ये कॉपी कर दूं, ठीक है, कंट्रोल सी एंड व्हाट आई डू, आई पुट इट हियर, इसके आगे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब इससे हो क्या जाएगा, मैं अपने साइट पे जाऊं एंड मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखो मैं जब इस पे हवर कर रहा हूं तो बैकग्राउंड कलर जो है मेरा वो चेंज हो रहा है। डिड आई पुट एनी स्टाइलिंग हियर, ये मैंने बस क्या की, एक क्लास ऐड की यहाँ पे। वाज दैट नॉट इजी? या ये तुम लोग कर सकते हो? यस, नो? ओके, सो अब ये तो हो गया कस्टम कंपोनेंट्स के लिए, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन कंपोनेंट्स। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने H1 टैग को अपने हिसाब से स्टाइल करूं, सो दैट इज व्हाट यू विल बी यूजिंग द डॉक्यूमेंटेशन फॉर। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें अवेलेबल हैं, जैसे पोजिशनिंग की भी है, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तुम कैसे डालोगे उसकी भी एक एग्जांपल्स हैं, एंड इवन यहाँ पे इमेजेस हैं और रादर सम एग्जांपल्स हैं टू हेल्प यू आउट ऑफ तुम्हारा आउटपुट तुम्हें दिखना कैसे चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे फ्लेक्स है, इफ आई गो डाउन देयर इज पैडिंग, मार्जिन, सी पैडिंग है, मार्जिन है, आई कैन इवन पुट दिस। तो ये सब तुम देखना और एक्सप्लोर करना कि हाउ टू यूज व्हाट क्लास, ओके। सी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, याद है मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 3XL डाला था, सो दिस केम फ्रॉम फॉन्ट साइजिंग। ये देखो यहाँ पे 3XL प्रेजेंट है। सो व्हाट दिस विल डू इज, मेरे फॉन्ट साइज को, आई थिंक दिस इज विजिबल, ये देखो मेरे फॉन्ट साइज को इस वैल्यू में 30 पिक्सल की वैल्यू में डिस्प्ले करेगा मुझे, राइट। सो आई कैन इवन चेंज दिस, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 3XL से 4XL कर सकता हूँ, 5XL 8XL तक डाल सकता हूँ, राइट। सो व्हाट दिस विल डू इज, माय बैड, और दिस विल डू इज इफ आई रिफ्रेश, तो ये देखो ये मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया, और राइट मैंने जूम इन किया हुआ था इसीलिए वो ये हो रहा है। आई केप्ट इट दिस वे, बट यू ऑल कैन सी, राइट, अगर मैं इसको बैक टू 3XL करूं एंड रिफ्रेश करूं तो ये उतना हो जाएगा जितना वो पहले था। इज दिस हार्ड टू डू? Now these are all custom components you can make, and इसीलिए I introduce you to Tailwind, because कैसा है Tailwind में you can make your custom components with your own logic and using the documentation. But कैसा हो जाता है ना, when you do bootstrapping तुम यूज करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, जब तुम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज उसमें डालते हो कि आई वांट दिस कंपोनेंट टू बिहेव सम अदर वे, जैसा वो उसका स्टाइलिंग अभी है उससे चेंज करके आई वांटेड टू बिहेव सम अदर वे, तो देयर इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड टेलविंड इज मोर इजियर टू मैन्यूवर देयर। सो यू विल अंडरस्टैंड नाउ। नाउ दीज आर कस्टम कंपोनेंट्स इफ यू वांट। एक यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, लाइक प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं,
जो टेलविंड की तरफ से हमें दिए जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. चलो हीरो सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये हीरो सेक्शन मुझे ऐसे दिखेगा. एंड उसका मुझे अगर कोड चाहिए, वट एवर आई वॉन्ट इट इन रिएक्ट में चाहिए, व्यू में चाहिए, ये फ्रेमवर्क्स हैं. एंड दिस इज प्लेन HTML में. अगर HTML में चाहते हो तो वो भी मिलेगा. सो इफ आई गो टू माई कोड, तो यहाँ पे मुझे उसका कोड मिल जाएगा. वॉट आई डू इज आई सिंपली कॉपी दिस. ठीक है, आई कॉपीड इट और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा. Shift.F. अब ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड आई कैन सी द आउटपुट हियर. इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे दिखने लगा. Was that difficult to do? What I did? अब इसमें मैंने क्या करना है, बस अपने कंटेंट को अपने हिसाब से डाल देना है. राइट. सो यू ऑल कैन मेक वेबसाइट्स इजीली. जो वेबसाइट्स तुम बनाना चाहते थे 2 दिन में, 3 दिन में, स्टैटिक वेबसाइट आई एम सेइंग. ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटीज के साथ इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट स्टैटिक वेबसाइट अगर तुम बनाना चाहते हो तो जो वेबसाइट तुम स्टाइलिंग कर करके 3 दिन लगाते, वो तुम 1 दिन में बना लोगे यहाँ पे. या विल यू नॉट बी एबल टू डू दिस? यस. अब देखो यहाँ पे जैसे मल्टीपल ये हमने देखा कि ये पैडिंग के लिए यूज होता है. पैडिंग 6 है इसकी. ठीक है. देन दिस इज बैकग्राउंड वाइट. अगर मैं इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रिफ्रेश. तो ये देखो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया पीछे. या सो ऐसे ही मल्टीपल चीजें तुम कर सकते हो. यू कैन इवन क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चेंजेस इसमें करके यू कैन इवन मेक दीज एज योर कस्टम टेम्पलेट्स. राइट. यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, मैं उसको चेंज कर दूंगा तो वहां पे मुझे चेंज दिखेगा. So all of this you can change, right? Easy, right? So this is what you'll be using Tailwind. This is how you'll be using Tailwind basically. अब there is Bootstrap also. I can show you Bootstrap also. मैं क्या करूँगा, Bootstrap के documentation पे जाऊँगा. Bootstrap 5 ही use latest. अब यहाँ पे मैं क्या, इसका documentation let's see. हाँ ये देखो यही है. इफ आई कॉपी दिस, ठीक है, ये मैं अपने CSS में कॉपी, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कैसे करना है. यू डोंट हैव टू क्या बोलते हैं, लर्न एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू रीड एंड इम्प्लीमेंट इट. यहाँ पे देखो क्या बोला है, कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड आवर CSS. तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूंगा. अब यहाँ पे मैंने इसको हटा देना है पहले तो. ठीक है. इवन दिस आई रिमूव. और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. एंड वो उसने क्या बोला, बाकी स्टाइल शीट्स के पहले. तो दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग. बाकी स्टाइल शीट्स के पहले मैंने डाल दिया. एंड आई एम फ्री टू यूज माई बूटस्ट्रैपिंग हियर. राइट. अब मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, वेर एवर इट इज, एंड आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल अंडरस्टैंड. ओके दिस इज हाउ यू यूज. लेआउट में है आई थिंक, या ग्रिड कॉलम्स कंटेंट पे है. यहाँ पे टाइपोग्राफी इमेजेस हैं. दिस इज हाउ यू विल बी पुटिंग इमेजेस. ये देखो, you see this? तो ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी पेस्ट, एंड वी आर गुड एट कॉपी पेस्टिंग, राइट? बिकॉज वी यूज ChatGPT. सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग. अब मैं तुम्हें असाइनमेंट एक्सप्लेन करता हूँ एंड आई थिंक माई जॉब हियर इज डन. ठीक है. मंडे से तुम्हें डिफरेंट ट्यूटर असाइन होंगे. दे विल बी टीचिंग यू. सो सबमिट योर असाइनमेंट्स देयर ऑल्सो एंड प्रॉमिस मी वन थिंग कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सो यू विल एंड्योर इट एंड गो थ्रू इट धीरे धीरे करके, डे बाय डे, टास्क बाय टास्क. ओके. बिकॉज आई सी दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स दैट बच्चे एनरोल कर देते हैं काफ़ी जोश में to become web developers. They go through smoothly with HTML and CSS because it is easy to understand. पर जब बात आती है जावास्क्रिप्ट की तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अटकने लगते हैं and then they lose interest. So promise me one thing, that you'll at least try till the boot camp gets over. Okay? Don't leave it in between, वरना you'll miss an opportunity, I feel. Okay? ठीक है, चलो. So I'll give you your assignment. Your assignment for today. Let me check. Yes, this only link it is. मैं इसको करूँगा copy and I'll paste it here. Hopefully यही link है वो. Let's see.
Why is this taking time to load? हाँ ये देखो तो अभी तुम्हारे पास 2 दिन है ना एंड आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज CSS. नाउ आई डोंट वांट यू ऑल टू यूज Tailwind or Bootstrap here because I want you all to properly understand and learn how to use CSS, right? मैं चाहता हूँ कि तुम CSS को अच्छे से सीखो, इसीलिए आई वांट यू ऑल टू डू दिस इन plain HTML and CSS only. आई वांट यू ऑल टू क्रिएट दिस वेबसाइट हियर, राइट? अब ये देखो हम 3 दिन से हम 2 हफ्ते से जो चीजें कर रहे हैं ना अपने HTML पे, हमने बस उसी को इसके हिसाब से डिस्प्ले करना है. रिमेंबर वी हैड आवर पोर्टफोलियो पेज जो हमारा फर्स्ट पेज था, राइट? देन वी हैड आवर अबाउट अस पेज जो हमारा सेकंड पेज था. व्हाट आई वांट यू ऑल टू हैव ऑन योर पोर्टफोलियो पेजेस कि तुम अपना एक ये जैसे जहाँ पे कार्ड्स है ना विद सम इमेज एंड सम टेक्स्ट एंड सम टाइटल, ये टाइटल और इमेज का एक डिफरेंशिएशन नजर आना चाहिए, तो मुझे फॉन्ट साइज अलग अलग चाहिए. यहाँ पे ऑल्दो इट इज सिमिलर, आई वांट द फॉन्ट साइज डिफरेंट हियर. ओके, इज दिस डूएबल? या तो जब ये कार्ड बनाओगे तुम, इस कार्ड के अंदर तुम्हारा कौन सा इमेज होगा ऑफ वॉट एवर प्रोजेक्ट तुम बनाओगे ना, तो उसका जैसे हम स्क्रीनशॉट खींच के अभी तक तुम मुझे डालते थे, राइट? इस पे गूगल क्लासरूम्स पे, व्हाट यू विल डू, सेम स्क्रीनशॉट्स तुम यहाँ पे डिस्प्ले करोगे. Is that difficult to do? Just take your image and display it here, all the screenshots. So ऐसे तुमने जो भी projects किए हैं, not in the bootcamp specifically, but whatever projects you will be doing henceforth, और अगर इसके पहले भी कुछ किए हो, so this is a good way for you to display all those projects, right? And you can display the output snippet here, फिर the title of your project and some थोड़ा सा description, एक 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट. सो यू विल मेक द कार्ड्स हियर. उसके नीचे यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो हमारा पैराग्राफ था HTML में, दैट वन ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ, एंड उसके नीचे देन योर स्किल सेट. सो दिस पेज, ये इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कार्ड्स, उसके नीचे एक टेक्स्ट पैराग्राफ जैसा तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट में था, और उसके नीचे यू विल हैव योर स्किल सेट, राइट? तो ये एक प्रोफेशनल साइट तुम्हारा दिख गया इस पेज पे. यस, देन अबाउट यू पे आई वांट एवरीथिंग एडिशनल टू व्हाट यू कैन प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट? जैसे तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे स्किल्स, सॉरी स्किल्स नहीं, स्किल्स तो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तुम्हारे अचीवमेंट्स या तुम्हारे सम सर्टिफिकेशंस और सम कोर्सेज दैट यू ऑल डिड, ऐसा कुछ अगर है तो डालो एंड डिस्प्ले इट देयर इन अ लिस्ट, एंड उस पर फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो एंड ट्राई टू मेक इट मोर डायनामिक. जब तुम कोई सर्टिफिकेशन डालो या समझो कोई एडिशनल हॉबीज जो भी है तुम्हारी, वो ऐसा कुछ डालो, तो पुट इट इन, navigate it to a different page where what will happen is तुम उस पेज पे उस हॉबी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन, एक इमेज ऐसा कुछ दिखा सको. सो एक मल्टी पेज वेबसाइट तुम्हारी बन जाएगी. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज 3 पेजेस. इट इज डूएबल, राइट? एंड देन कॉन्टैक्ट अस पेज पे जो तुम्हारा फॉर्म था, ठीक है, जो तुम स्टाइल कर रहे थे, आई वांट यू ऑल टू स्टाइल इट इन अ वे कि वो इस थीम से मैच करे, एंड दैट इज अ गुड थिंग दैट यू ऑल स्टाइल्ड इट देयर, एंड उसको तुमने डिस्प्ले किया अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू डू. नाउ स्टाइल इट अकॉर्डिंग टू अ थीम. यहाँ पे तुम एक थीम को फॉलो करना सीखोगे थ्रू आउट ऑल योर पेजेस, राइट? सो you will be doing this assignment for 2 days and you will be submitting it till Monday, right? जो तुम्हारे वीकली असाइनमेंट्स है तुम मंडे को सबमिट करते हो. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या किसी को कोई डाउट यहाँ तक? विल यू ऑल बी एबल टू डू दिस? यस. अच्छा, एक और चीज, ये जो नेविगेशन है यहाँ पे, दिस इज शोन साइड में, राइट? आई डोंट माइंड इफ यू ऑल मेक दिस योर ऑल्सो. जिनको जो एकदम बिगिनर्स हैं, राइट, CSS में, इफ दे शो इट हियर ऑल्सो, नेविगेशन ऐसे करके बताएं अगर हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट इफ यू कैन डू इट वर्टिकली इट इज बेटर, क्योंकि दैट विल एक्चुअली इंप्रूव योर स्किल्स इन CSS. दिस इज लिटिल डिफिकल्ट देन शोइंग इट हियर हॉरिजॉन्टली. अगर तुम इसको ऐसे वर्टिकली कर पाओ. हाउ टू अप्लाई फिल्टर, सर? नहीं, ये जो है ये सब ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, दीज आर ऑल स्टैटिक फील्ड्स. सो फिल्टर का एक टेक्स्ट होगा, यहाँ पे एक डिव का बॉक्स, उसमें तुम ऑल लिखोगे और उसको ब्लैक बैकग्राउंड दोगे. सिमिलरली यहाँ पे व्हाइट एंड उसमें टेक्स्ट. दीज आर ऑल डिव ब्लॉक्स कंसिडर. डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. ये जो है इनको डिव ब्लॉक्स कंसिडर करो. These are or buttons, consider them as buttons, okay? So you can
इवन क्लिक ऑन देम, एक फंक्शनैलिटी और ऐड हो जाती है यहाँ पे। देन डोंट मेक दिस डायनामिक वेयर मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ, just keep it simple, keep it into buttons and show it displayed here. Okay, चलो, so I'll be taking my leave. इसके आगे your guest lecture will take you all. अच्छा हाँ, there is just one thing. जैद का यहाँ पे एक छोटा सा क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन है, और rather try for HTML and CSS, right? Let's take it as case study. What has happened here is Zaid has put एक image है. This is an image. This is also an image. You see this, and these are also images. So all of ऐसे multiple images और text quick coloring को use करके Zaid has done this. This form is also good looking. Good Zaid. So ऐसे ही अब ये this is matching the Google का theme, right? सो ऐसे ही ट्राई टू रेप्लिकेट सम वेबसाइट्स. इससे क्या होगा, यू विल हैव सम प्रैक्टिस तुम्हारी भी, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट वेबसाइट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड उसको तुम एज डमी यूज कर सकते हो फॉर योर ओन प्रैक्टिस, राइट? एंड दिस इज गुड. अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में दिस इज अ पासवर्ड फील्ड, इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ऑल्दो देयर इज नो लॉजिक हियर, बट दिस लुक्स गुड, राइट? एंड आई सी, मैंने डॉक्यूमेंटेशन और रादर इसके कोड बेस में देखा कि देयर वाज दिस प्रोफाइल का भी इमेज. डिड यू यूज इट देयर समवेयर, और वाज इट जस्ट एक्स्ट्रा? अच्छा ठीक है. या इवन दिस, ये भी इज दिस अ लिंक? आई डिडंट सी द कोड बेस, मैंने बस ये देखा. लेट्स सी. अच्छा चलो ठीक है, लेट्स नॉट, आई मीन वी आर सम ऑन समवेयर एल्स, आई मीन, राइट? ठीक है, चलो चलो. Good job, Zaid. Good job. अच्छा, you've done. You almost replicated it perfectly. Nice job. So ठीक है then. I'll take my leave. Thank you all for attending and learning from me. It was a good experience teaching you all, and hope we meet. अच्छा, if there is any doubt, अगर तुम जावास्क्रिप्ट जब सीख रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई चीज़ में अटक गए हो, so you all can connect me on my socials if you all want, और Slack पे तो मैं available हूँ. If I don't reply on Slack, try to connect me on socials if you want. No issue with it. ठीक है? इसके आगे we are not a trainer trainee anymore. We are proper mentor mentee. So you can approach me and we can handle it that way. Okay? So, Alina ma'am, over to you. Thank you. Yeah, thanks, Sultan. So, hi everyone. I'm Alina Mariam. So, about me, let me introduce myself so that you are aware. So about me, I believe I'm a tech enthusiast. I have been coding since my second year of college. और इंग्लिश में बेटर है, हिंदी में बेटर है? सुल्तान, क्या यूज कर रहे हो आप लोग? चलो, आई विल मिक्स बोथ एंड आई विल डिलीवर. तो आज का टॉपिक एक्चुअली गेस्ट लेक्चर का रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केसेस है. सो बेसिकली माय मोटिवेशन हियर फॉर दिस टॉपिक इज टू काइंड ऑफ रेज एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स यू ऑल कि एआई में यूज केस इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एक्चुअली. इसके अंदर चलता क्या है आजकल, चैट जीपीटी, जेन एआई बहुत ज़्यादा यूज हो रही है टर्म्स. सो वी विल ड्वेल इनटू दैट. And yeah, about me, I'm a full stack developer in City Corp. It's fintech company, not the commercial one. And I have been working there for 3 years. So in corporate life itself, it has been 3 years. That's a little bit about my background. So keeping time into consideration, let's jump into the AI use cases. I will be presenting my screen and hope I am audible properly. Okay, entire screen. Sure. If anyone have any doubts in entire presentation, they can ask by raising their hands, and in the last as well, we have kept the time for the presentation. Okay, let me start with the presentation. How many people we have? Okay.
So, what like I just want to know whom from the call has worked in AI or has any idea in AI, just to have the audience look. Anyone? If the answer is no, they can say no as well. It's fine. I want this session to be interactive. क्या हो गया? सो गए क्या सब? सुल्तान शहर गए तो? Okay. Let's. Okay, no work experience. Okay, little bit. Okay, so we have audience having some idea. Fine. Let me share my screen. Okay, slideshow. Okay, so let's have a look on use cases. I hope this excites you. We are going to look into two use cases. Number one is document digitization and entity extraction. I won't go into much technical details because I know that many of you would not be aware of technical details. But let's just scrape through it so that what is it there, that why this word is so buzzing. We will just get some idea. So the first use case is document digitization and entity extraction. So by the words of it, it means that we are trying to capture the document, and whatever the entity, whatever the text data is there in the document, we are going to digitalize it. So if we have hard copy of PDF or we have scanned documents of PDF, we are going to look into that. So the things we will be covering would be problem statement, tech stack, features, algorithm, demo, and the limitations. ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर लेती हूँ. Problem statement. Okay, we need to create a process to input PDF documents and extract the required fields using optical character recognition. You would have been aware of the term OCR, so that is this one we are going to implement, and NLP, that is natural language processing. So basically, we are trying to extract data from the PDF document using these tools. So the tech stack. अच्छा, इसमें से कुछ सुना सुना लग रहा है क्या किसी को? किसी ने कुछ यूज किया है? पाइथन, pandas, flash, jupyter notebook, anything? Okay, Arvina has used. Okay, good to know. Then you can relate with this presentation, right? And if not, that's fine too. Let's. It's always something. There is always something to learn new, right? Okay, so I'll just touch base upon tech stack. Python, it's a coding language. Tesseract and OpenCV. So Tesseract is actually a Google open source tool. I will dwell into that more later. OpenCV, it's for image processing. So if you would have seen in car sorry, in toll booths, you would have seen that there is camera and they capture the nameplate of the car, and then they convert the nameplate to the text, and then they process the data, right? So that capturing of data, where to locate, where is the motion, all these things is handled by OpenCV. This is the library given by Python itself. Then we have pandas. So if you are aware of SQL, right? SQL is a DB management, database management. Similarly, in Python, we have data frame. Like we have table in SQL, we have data frame in pandas. So similar concept, just in Python. So pandas we have used for, once we have extracted the data, we need to kind of process some data transformation. For that, we have used pandas. Okay, Spacey. Spacey is a natural language toolkit. So where natural language processing is used, let me share it with you. So natural language processing, for example, if you have Amazon and there are customer reviews, right? तो कस्टमर रिव्यूज में क्या रहता है ना कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, या फिर आप स्टॉक्स का अगर आप एनालिसिस करते हो तो न्यूज में मतलब व्हाट
what is news saying, what is public speaking about, is it positive or is it negative. So kind of sentiment analysis उसके लिए स्पेसी यूज किया जाता है. देन मतलब नेचुरल लैंग्वेज टूल किट का ये एक टूल है स्पेसी. तो मैं बस ये इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि एक चीज एक आइडिया हो कि एआई हम कौन कौन सी चीजों में यूज कर सकते हैं. तो इधर हमने जो यूज किया है हमारे यूज केस में विच इज डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन. सो बहुत सारा डेटा है, तो उस डेटा में डेट्स होती है, उस डेटा में प्लेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेम होता है. तो उसके लिए हमने स्पेसी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट का जो टूल है वो अपने आप टैग कर कर दे देता है. तो वी विल सी इट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स लेटर. फ्लास्क इज लाइक वेब फ्रेम वर्क है पाइथन का. अगर वेबसाइट वगैरह बनानी है आपको तो फ्लास्क यूज करते हैं. एंड जुपिटर नोटबुक इज यूज फॉर कोडिंग. लाइक देयर इज फॉर एग्जांपल यू people use VS Code, right? I saw Sultan was using VS Code. So similarly, Jupyter Notebook is mainly used for Python. I have used people using it mainly for Python because it's much more efficient. And in AI machine learning, we need different level of GPUs, different high level of GPUs, and also we can configure that in Jupyter Notebook. So that's why it's used. Okay, we have covered the technology stack. Let's move on to the next one. Okay, so let's have a look what Tesseract is, right? Sorry, I think there. Okay, I will have a look on messages now as well. Sorry, I forgot to have a look on that. Okay, so Tesseract. It's actually it's open source code. It's OCR library. OCR is optical character recognition. That is, optical means we have image character, so we have alphabetical character, numerical character, any character, right? Optical character recognition. It's self-explanatory. Then it has been trained into 192 models. That's the sorry, 192 languages, right? Like that's crazy. This is the reason why Tesseract is so famous among OCR tool. It has been trained for 192 models, and there are different kinds of recognition: image as word, text, block, etc. So image by word, image sorry, text block as I mentioned before, right? We use for car number plates, right? So we will have more use cases where Tesseract is used. I will mention that. Then it's originally written in C++, but we since we are using in Python, right? And it was needed to be more generalized, so we have a third-party wrapper, which actually provides us to use in Python as well. And internally, it uses LSTM, CNN, adaptive bannerization. So these all are the algorithms in the ML in the ML domain, but I'm not going to dwell into it much more because it would be very technical. But it's very interesting to actually get to know how this algorithm works, right? Like it's basically training the data. Like we have thousands and 2,000 of data, and we just uh, put that as an input for the machine to learn. It is labeled data. So, for example, how kids learn, right? If we tell the kids that this is a bird and this is a dog, we fed that data again and again so that they recognize, and then once they have enough training, they can actually kind of they can actually kind of recognize what is what. So similarly, machine learning is work, but how it actually works, it's really interesting. I would recommend you to actually go and look into LSTM and CNN. Like personally, I like CNN algorithm more, how it works. So you can start with that if it excites you. Okay. So it was initially created by HP, but then Google comes, Google take over things. So yeah, that happened here as well. And then we have different configurations for Tesseract. We have columnar, rotated. So what this basically means is that it can actually capture the data which is rotated. Like we have a page which is 90-degree rotated, so it can capture that as well. Columnar, if we have a vertical text, it can capture that as well. So it's very dynamic. Like it like the range is very high. It can work in different model 192 languages as well as the different orientation as well. So if you're like interested to know more about this, you can go like orientations and all, you can go to this link and explore more.
about this. Okay, so let's deep dive into the proposed solution. So if we think about it, there like what all the solution can be, it can be template based. So by template based, what I mean is that it's wholly coordinate based. For example, um, if we have a paper, and we know that half of the paper consists of some paragraph, half of the paper consists of numeric values, something like that, coordinate based. Okay, we can actually segment the data based on template. There are forms, there are paragraphs, so that is template based. Then we have rule based, that you are actually kind of, for example, we want to digitize the document, right? So for example, if we want to get the contact numbers, whichever is present in the document, so we can have a basic regular expression. So regular expression is basically pattern matching of the data. So in the sense that mobile number, how what mobile number looks like, right? It's a 10 digit numeric value, and it starts from basically a 9 or 8 or 7, something like that. So we can have a rule base, and then we can get that data, but it's very what we can say, it's very niche, it's very beginner friendly, right? It's not that efficient. And the third one is deep learn based, that we actually, for example, you have name as Alina, you have name as Aisha, right? So we label these things, like there are 1,000 documents, 1,000 forms, and we label these entities as name, and then machine learn itself. Okay, if there's something, there's some object as the name, then we can tag it as a name. So what we have done is the combination in the what we are going to go through is the combination of all these three. So how this combination of all these three is implemented, we will touch base on that. If it's going too fast or if it's getting too complicated, you can let me know. I'll try to explain it in slower pace. Yeah. Okay, so if we talk about the features, right? So it can convert any image to string, and then it's useful like it's handwritten documents. We have several handwritten documents. We have in banking domain, we have pricing supplement documents. We don't want to, just sit and manually convert those data into digital format. We want it converted in digital document, but upon that, it's not just scanning. Upon that, we need the entities as well. Like there are several entities, for example, class, school. So we want that mapped as well, that key, that school name is this and class is this, something like that. We need to have a set of table. So let's look into the features. It can detect named entities, and it is useful for scanned documents as well, and it's useful for handwritten document as well. And the main feature is that we don't need any training data. So training data usually requires 1,000 2,000 of data. We don't need to training data to fed into the model. So that's the plus. Okay, I'll just take a pause here, and I would like to tell and promote the ongoing bootcamp which is going to come in terms of which is launched by Pronttera. So I would recommend you to join. So I have looked into the curriculum. It's very thorough. If you are interested in career development, or if you are interested how the end-to-end processes work, end-to-end system works, it's covering everything. It's covering front end, back end. It's covering deployments and designs as well. So if you are serious about learning, and if you want to excel in career, or if you want to learn, learning is good as well. It's life. So I would recommend to join that, and keep an eye when it's getting launched, and share it with your friends as well. Mm, okay, let's get into the next slide of the implementation. I believe people are getting less ML is something which excites, but let's see. है ना यहाँ पे लोग ML के interested? I hope so. Cool, cool. Good to know. Okay, so let's have a use case then. We have this document, right?
we have the this is banking document. We have like 10,000, like this documents comes in very large amount, and this document is pretty, like if you see the amount, right, it's, yeah, they are zeros you can't count, right? If you are aware of bonds, these bank uses, right? So the transactions, you can see how many zeros are there. So transactions and everything is happening, and it's scanned document. So manually people are writing, and it's giving, like, it's lot of work, and the error accuracy, it's not good, right? So to actually solve this, this is where AI comes handy, right? It's here to make our task easy. So you see the input, right? So what would be the output? The output would be, I'll just tell. So output would be this as a text, and then the main thing which we required was that we need, this problem statement consisted was that we needed a table, right? So if you see here, we have issuer, redefined properties limited, we have dealer, we have manager, etc. So I want a table where I have a column issuer, and we have the value as this. Then we have second value as, say, ABC Bank. We have third value as BCD Bank. So manually creating table, it's a huge task, right? So why not to convert these values into key value pairs? Issuer, we tag issuer as this, we tag dealer as this, we tag manager as this, and then we have the set of data ready. So this was the problem statement, and its motive is to have better accuracy, rely on machines rather than having error and getting the transactions faulty. Okay, so let's get into the main part, which is algorithm. I'll just have a look on time. Okay, we have some time. Algorithm. So the first one is, of course, we load the PDF and convert individual pages of the PDF. Okay, so this is basically we are using OpenCV to load our PDF. Like the pages of the PDF is converted into JPEG, that is image format. Then the second one is the save the individual pages as data frame. So fine, we have actually loaded the PDF, the JPEG, but that JPEG we want it to be converted into data frame. So when I say data frame, let's have a look. So here you see redefine properties limited, right? So when we use Tesseract and when we are getting the results, we can see pricing supplement document. Okay, I'll that's this data frame is for different image. I'll share it in some time. And then so first we converted the PDF into JPEG. Then we saved that JPEG images into the data frame. So what the data frame is resulting is in x coordinate. This left top width height is xy coordinates. Okay, I'll dwell into this more because we have the example in next slide. And then find a starting index. So basically here you see, right, we have data after this issuer redefine. We want this as a table. We are more interested in issuer redefined properties. So this is getting segregated by this margin, right? So we would be requiring to get this margin as well. So find a starting index and a divider margin for the key value pair. So we would require the margin for key value pairs. That is this coordinate, this line, some imaginary line, which we can classify later, that on the left is key and on the right is a value. So, okay, where is it? Yes. So after that, what would we would be interested is that separate the data into two parts. So for if we have found a margin, then what else we need? We have found the starting index. We would be separating the data, right? So whichever this coordinate is, above that we have paragraph, and below that we have the key value pairs. We would be interested on that. And then for the first page grouped all the words, so we want to group all these words. I'm just going through it in upper manner because we have examples of code, and then I will explain it in much more detail. So the next one would be yeah, by grouping, like we would like to group all these words together since it's a paragraph, and we would be interested to group these words in key value pairs, right? Okay.
we have this algorithm continued. So basically, we want to segregate the words based on the margins for key value pairs, group the keys based on bullet style. So we know that issuer, we see here bullets, right? So these are the keys. Group the values which are spread over one or more lines, right? So, for example, here you see two lines. Here it's grouped. So we want these two lines to be tagged together, not with this line. So that needs to be performed as well, and then and finally we would be concatenating and getting the final result. So let's deep dive into the code. Okay, this is where it gets interesting. What all the libraries we want we have imported here. Okay, and then we are reading using OpenCV. So how it looks first, let me show you that. Okay, so this is one pricing supplement document, right? And this green text boxes you see, this is done by the use of OpenCV. So OpenCV and Tesseract. So the data frame we saw, right? Let me show you again here. This data frame we see here. Let me if you see here, it's pricing supplement dated 18 June of 2023. Now, what we have done, we have processed this page using Tesseract, and now Tesseract has given us the output for this pricing supplement dated 18 June. So it's basically giving us the details. Pricing supplement dated 18 June 2021. It's the basic text conversion of the image. It's normal, like nothing rocket science into this, but extracting the data is the main part, right? So after we get this normal text, Tesseract gives us the coordinates as well. So it gives the x, y, this left top, width, height. This is x, y coordinates. So pricing supplement, which coordinate it's lying in this coordinate. So it's basically giving us this coordinate. Sorry, this coordinate, right? Pricing supplement pricing for lies in this coordinate. So using these coordinates we can actually segregate the data. We can actually combine the data and get the output result. So let me just go through it. We have the data frame. It's pretty magical how Tesseract works and give us the output in terms of xy. It gives us the confidence as well that that Tesseract is sure that 96% that word is pricing. So it's giving us the correctness as well, accuracy as well. So yeah, this is how it works, and then there are several data manipulation to get the coordinate of summary nodes. Like once we have received this data, we need to check which is the key, which is the key, which is the value. So for that, we uses the coordinate. Like there are several data manipulation here, data processing here. I'm not getting much into technical details, but yeah, after all the data manipulation, what we are interested in is receive. So for example, dictionary, we use it in like we have hash map in Java and all. We use dictionary in Python. So if okay, let me, not sure whether I have that. Okay, so if I am interested in maturity date, I can just call for the maturity date and I can get the details 22 June 2026, which we were interested in, like net proceeds, specified denominations, interest commencement dates. We see now it's mapped to key value pairs, right? So this key value pairs, we have the data. And for example, if there are handwritten documents in medical domain, there are mainly handwritten documents. So we can tag the name. So if we would call name and then we would get Alina, right? Or we would get the list of names of the hospital medical records. So this is how it's useful, the use case of document digitization and how we have implemented it. One more small key point I would like to touch base is upon Spacey library, which I mentioned before. Right now, what we did is we, based on the margin, right? If it's form based, it's very useful. Based on the margin, we have segregated the data and we have digitalized it. But what if we document is not margin based? What if it's whole paragraph based, right? So we have inbuilt Spacey toolkit for that. So
if we process the data from Spacey toolkit, it actually tags the entities by itself. So it's already trained model. We don't need to train the model. So 18 June 2021, it's date. It's already the Spacey model already knows. Then this is the organization, African Development Bank. Then this is date. This is law. This is product. So there is notes in banking like commodities and all commodities or bonds. There are notes as well. So it's a product. So you see how magical it is that we are not fetching any training data, we are not training the model, we can just importing Spacey, it's this much only line of code, and we can just tag the data into different entities. So yeah, this was the other use case which is interesting, and let me share the last use case. I'll just Mm, there. Okay, one more thing. If AIML is the domain which excites you, then this is KNN. This is clustering algorithm. So how we have actually got the margin coordinate right? For that we have used this clustering method. So where else this? So clustering basically means that you are clustering the similar things in one group and other similar things in another group. That is clustering. So this is KNN, K nearest neighbor clustering. And here you see this key value for getting the margin of the key value pairs, for getting the margin where the forms are segregated, where we have the left as key and where we have the values as right. We can use this KNN algorithm which bifurcates, and then we can take the mean of the coordinates and we would get the margin, right? This is how we can get the margin coordinate. This was another use case of AI. There are many other clustering algorithms. If you see, they are getting used in many areas for recommendations as well, right? Like if you go to Amazon and you see that if you buy comb, they actually they recommend oil as well. They recommend some hair products as well. So it's clustering only, just to touch base on that. Okay, limitations. We can skip that. I'll just touch base upon the use case number 2. I'll just go through it in an upper manner. So, fake news recognition system. So, this project we did in our college. Basically, there was Corona going on, and there were many fake news getting spread. Right. So, this particular system, fake news recognition system, actually you can give the input to the system and it detects whether it's fake or not. So there are two system we have used, which is um, content based and the other one is fact based. So I won't go much detail into that because it would be very technical, but if anyone is interested, there is a publication which we have done in IRJT, and you can go through this publication that how AI and ML is getting used to detect the detect the false the validity of the news. So you see here, this is actual and this is predicted. So our model works kind of 100% in the data. So yeah, that's all from my time. I hope you enjoyed the session, and and you would be more interested to step into AI and ML domain. It's like it would seem that it's very difficult, but to be honest, libraries and everything is available. You can just go and use it for your use cases. And if you are interested to know about the mathematical logic about that, there are many. Medium is one of the one of the platform you can go. Medium, there are there are blogs written which is very interesting in a very good manner. For CNN I recommend it, right? For CNN it's okay. Am I Am I speaking? speaking? Okay, Okay. it's not on mute. So yeah, you can go there and learn more about AI and ML. That was all about my time. I hope you enjoyed. Yeah, any questions? Okay, to take that. कोई क्वेश्चन वगैरह है, फील फ्री टू आस्क. Can you tell me a bit about? Sorry, that message was missed. What was it?
about Q learning. Okay, Q learning, I know the word, but I am not sure. Is it a concept of MLAI only? I think it's for gaming purpose. I believe it's used for reinforcement learning, but I'm not sure about it. Reinforcement learning, yeah. Yes, so not special, like not basically not aware of much about Q learning, but yeah. Happy to take about the questions if you have any questions around this project, because MLAI I don't use it as an academic purpose. I use it as my personal experimental basis. So if you have any questions in this project about this project, I would be more happy to answer. And if you want any platform to learn to as well, yeah. Okay, ठीक है. आई होप अब जाकर थोड़ा सा मीडियम में सर्च कर सकते हैं आई एम एल के बारे में. माई मेन मोटिवेशन वॉज टू kind of introduce this to AIML and kind of raise the interest. Yeah. Thanks, Sherwin. Okay, thank you. I think we are good to close the call. Sultan has left, so I'm not sure how whom to hand over. Pronttera, what? Yeah. Okay, sure. Okay. Thank you. Thank you. Any feedback should be welcome. If it was too technical or anything, I'm open to that as well. So, yeah, do let me know. Okay, then. Bye bye. Thank you all.